Chapter 17. Mr. and Mrs. John Knightley were not detained long at Hartfield. The weather soon improved enough for those to move who must move, and Mr. Woodhouse, having, as usual, tried to persuade his daughter to stay behind with all her children, was obliged to see the whole party set off, and return to his lamentations over the destiny of poor Isabella, which poor Isabella, passing her life with those she doted on, full of their merits, blind to their faults, and always innocently busy, might have been a model of right feminine happiness. The evening of the very day on which they went brought a note from Mr. Elton to Mr. Woodhouse. A long, civil, ceremonious note, to say, with Mr. Elton's best compliments, that he was proposing to leave Highbury the following morning in his way to Bath, where, in compliance with the pressing entreaties of some friends, he had engaged to spend a few weeks, and very much regretted the impossibility he was under, from various circumstances of weather and business, of taking a personal leave of Mr. Woodhouse, of whose friendly civilities he should ever retain a grateful sense, and had Mr. Woodhouse any commands, should be happy to attend to them. Emma was most agreeably surprised. Mr. Elton's absence just at this time was the very thing to be desired. She admired him for contriving it, though not able to give him much credit for the manner in which it was announced. Resentment could not have been more plainly spoken than in a civility to her father, from which she was so pointedly excluded. She had not even a share in his opening compliments. Her name was not mentioned, and there was so striking a change in all this, and such an ill-judged solemnity of leave-taking in his graceful acknowledgments, as she thought, at first, could not escape her father's suspicion. It did. However, her father was quite taken up with the surprise of so sudden a journey, and his fears that Mr. Elton might never get safely to the end of it, and saw nothing extraordinary in his language. It was a very useful note, for it supplied them with fresh matter for thought and conversation during the rest of their lonely evening. Mr. Woodhouse talked over his alarms, and Emma was in spirits to persuade him away with all her usual promptitude. She now resolved to keep Harriet no longer in the dark. She had reason to believe her nearly recovered from her cold, and it was desirable that she should have as much time as possible for getting the better of her other complaint before the gentleman's return. She went to Mrs. Goddard's accordingly the very next day, to undergo the necessary penance of communication. And a severe one it was. She had to destroy all the hopes which she had been so industriously feeding, to appear in the ungracious character of the one preferred, and acknowledge herself grossly mistaken and misjudging in all her ideas on one subject, all her observations, all her convictions, all her prophecies for the last 6 weeks. The confession completely renewed her first shame, and the sight of Harriet's tears made her think that she should never be in charity with herself again. Harriet bore the intelligence very well, blaming nobody, and in everything testifying such an ingenuousness of disposition and lowly opinion of herself, as must appear with particular advantage at that moment to her friend. Emma was in the humour to value simplicity and modesty to the utmost, and all that was amiable, all that ought to be attaching, seemed on Harriet's side, not her own. Harriet did not consider herself as having anything to complain of. The affection of such a man as Mr. Elton would have been too great a distinction. She never could have deserved him, and nobody but so partial and kind a friend as Miss Woodhouse would have thought it possible. Her tears fell abundantly, but her grief was so truly artless, that no dignity could have made it more respectable in Emma's eyes, and she listened to her and tried to console her with all her heart and understanding, really for the time convinced that Harriet was
the superior creature of the two, and that to resemble her would be more for her own welfare and happiness than all that genius or intelligence could do. It was rather too late in the day to set about being simple-minded and ignorant. But she left her with every previous resolution confirmed of being humble and discreet, and repressing imagination all the rest of her life. Her second duty now, inferior only to her father's claims, was to promote Harriet's comfort, and endeavor to prove her own affection in some better method than by matchmaking. She got her to Hartfield, and showed her the most unvarying kindness, striving to occupy and amuse her, and by books and conversation, to drive Mr. Elton from her thoughts. Time, she knew, must be allowed for this being thoroughly done. And she could suppose herself but an indifferent judge of such matters in general, and very inadequate to sympathize in an attachment to Mr. Elton in particular. But it seemed to her reasonable that at Harriet's age, and with the entire extinction of all hope, such a progress might be made towards a state of composure by the time of Mr. Elton's return, as to allow 'em all to meet again in the common routine of acquaintance, without any danger of betraying sentiments or increasing them. Harriet did think him all perfection, and maintained the non-existence of anybody equal to him in person or goodness, and did, in truth, prove herself more resolutely in love than Emma had foreseen, but yet it appeared to her so natural, so inevitable to strive against an inclination of that sort unrequited, that she could not comprehend its continuing very long in equal force. If Mr. Elton, on his return, made his own indifference as evident and indubitable as she could not doubt he would anxiously do, she could not imagine Harriet's persisting to place her happiness in the sight or the recollection of him. Their being fixed, so absolutely fixed, in the same place, was bad for each, for all three. Not one of them had the power of removal, or of effecting any material change of society. They must encounter each other, and make the best of it. Harriet was farther unfortunate in the tone of her companions at Mrs. Goddard's, Mr. Elton being the adoration of all the teachers and great girls in the school. And it must be at Hartfield only that she could have any chance of hearing him spoken of with cooling moderation or repellent truth. Where the wound had been given, there must the cure be found if anywhere, and Emma felt that, till she saw her in the way of cure, there could be no true peace for herself. बाब 17 मिस्टर और मिसेस जॉन नाइटली को हार्टफील्ड में ज्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ा। मौसम जल्द ही उन लोगों के लिए काफी हद तक बेहतर हो गया जिन्हें मुंतकिल होना जरूरी है, और मिस्टर वुड हाउस ने, हमेशा की तरह, अपनी बेटी को अपने तमाम बच्चों के साथ पीछे रहने के लिए राजी करने की कोशिश करते हुए, पूरी पार्टी को खत्म होने को देखा, और बेचारी अजाबिला की तकदीर पर अपनी नोहा ख्वानी की तरफ वापस लौटना, जो बेचारी अजाबिला पर गुजर रही थी। उनके साथ इसकी जिंदगी, उनकी खूबियों से भरी, उनकी गलतियों से बेपरवाह, और हमेशा मासूमाना तौर पर मसरूफ, शायद सही खुशी का नमूना हो। उसी दिन की शाम जिस दिन वो मिस्टर एल्टन की तरफ से मिस्टर वुड हाउस के लिए एक नोट लेकर आए, एक लंबा, सूल, रस्मी नोट, जिसमें मिस्टर एल्टन की बेहतरीन तारीफों के साथ कहा गया था, वो हाई बुरी को छोड़ने की तजवीज़ दे रहे थे। सुबह के बाद गुस्ल के रास्ते में जहां कुछ दोस्तों की पुरजोर दरखास्तों की तमील में उसने चंद हफ्ते गुजारने के लिए मसरूफियत की थी, और इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि वो मौसम और कारोबार के मुख्तलिफ हालात की वजह से मिस्टर वुड हाउस से ज़ाती रुखसत लेने में नाकाम रहे, जिनकी दोस्ताना तहजीबों के लिए उसे हमेशा शुक्रगुजारी का एहसास बरकरार रखना चाहिए, और
मिस्टर वुड हाउस के पास कोई हुक्म है, उन पर हाजिरी देकर खुश होना चाहिए। एमा को सबसे ज्यादा इत्तेफाकी तौर पर हैरत हुई मिस्टर एल्टन की उस वक्त गैर मौजूदगी मतलूबा चीज थी। उसने उसे बनाने के लिए इसकी तारीफ की, हालांकि जिस अंदाज में इसका ऐलान किया गया था इसके लिए उसे ज्यादा क्रेडिट देने के काबिल नहीं था। नाराजगी उसके वालिद के सामने एक तहजीब से ज्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं कही जा सकती थी, जिससे वो इस कदर वाज़ेह तौर पर खारिज थी। उसकी इब्तिदाई तारीफों में इसका कोई हिस्सा भी नहीं था, इसका नाम नहीं लिया गया था, और इस सब में एक हैरत अंगेज तब्दीली थी और उसके दिलकश इतराफात में रुखसत लेने की ऐसी गैर मुनसिफाना संजीदगी, जैसा कि इसने सोचा। सबसे पहले अपने वालिद के शक से बच नहीं सका, ताहम उसने ऐसा किया। उसके वालिद इतने अचानक सफर की हैरत से काफी परेशान थे और उनके खौफ से कि मिस्टर एल्टन कभी भी इसके इख्तिताम तक महफूज तरीके से नहीं पहुंच सकते, और उनकी जबान में कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ये उसके लिए बहुत मुफीद नोट था। उनको उनकी तन्हा शाम के दौरान सोचने और गुफ्तगू के लिए ताज़ा मादा फराहम किया। मिस्टर वुड हाउस ने अपने तौर पर बात की और एमा अपने तमाम तर मामूल के साथ इन्हें दूर करने के लिए बाहौसला थी। उसने अब हैरियट को मजीद अंधेरे में न रखने का तहैया कर लिया था। उसके पास इस बात पर यकीन करने की वजह थी कि वो अपनी सर्दी से तकरीबन ठीक हो चुकी थी, और ये जरूरी था कि इस शरीफ आदमी की वापसी से पहले उसे अपनी दूसरी शिकायत को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। उसके मुताबिक वो अगले ही दिन मिसेस गॉडार्ड के पास गई ताकि बातचीत की जरूरी अहमियत से गुजर सके, और ये एक शदीद वक्त का तकाजा था। इसे इन तमाम उम्मीदों को खत्म करना था जो वो इतनी मेहनत से पाल रही थी, किसी को तरजीह देने वाले के बदतमीज किरदार में नजर आने के लिए, और खुद को तस्लीम करना था कि वो एक मौजू पर अपने तमाम ख्यालात में सरासर गलती और गलत फैसला करती है। इसके तमाम मुशाहदात, इसके तमाम यकीन, पिछले 6 हफ्तों से इसकी तमाम पेशीन गोया इतिराफ ने उसकी पहली शर्मिंदगी को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया, और हैरियट के आंसू की नज़र ने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे दोबारा कभी अपने साथ यूं ढील नहीं करनी चाहिए। हैरियट की जहानत बहुत अच्छी थी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, और हर चीज में इस तरह की होशियारी और खुद के बारे में घटिया राय की गवाही देती है, जैसा कि इस वक्त इसके दोस्त के लिए खास फायदा के साथ जाहिर होना चाहिए। एमा सादगी और शाइस्तगी को सबसे ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार और मुखलिस थी, और जो कुछ मिलनसारी के जज्बात से पर था, वो सब जो साथ साथ होना चाहिए हैरियट की तरफ लग रहा था, इसकी अपनी नहीं। हैरियट ने अपने आप को शिकायत करने के लिए कुछ नहीं समझा। मिस्टर एल्टन जैसे आदमी का प्यार बहुत बड़ा इम्तियाज होता, वो कभी भी इसकी मुस्तहिक नहीं हो सकती थी, और मास वुड हाउस जैसी गैर जानिबदार और मेहरबान दोस्त के अलावा किसी ने ये मुमकिन नहीं सोचा होगा। उसके आंसू यूं तसलसल के साथ गिरे, लेकिन इसका गम वाकई बे साफ्ता था कि कोई भी वकार उसे एमा की नज़रों में ज्यादा काबिल इहतराम नहीं बना सकता था, और उसने उसकी बात सुनी और पूरे दिल और समझ से उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वाकई उस वक्त के लिए हैरियट को यकीन हो गया था, उन दोनों में से आला मखलूक थी, और इससे मुशाबहत इसकी अपनी फलाह व बहबूद और खुशी के लिए इससे ज्यादा होगी जो जहानत या जहानत कर सकती है। सादा दिमाग और जाहिल होने के बारे में तय करने में दिन में बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने उसे हर साबिका वाक़याती तसलसल के साथ छोड़ दिया जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि वो आजिज़ाना मिजाज की मालिक और समझदार है, और सारी जिंदगी इस तख़य्युल को दबाती रही। अब उसका दूसरा फर्ज सिर्फ उसके वालिद के दमों से कमतर हैरियट
के सुकून को फरोग देना था और मैच मैकेनिक के मुकाबले में किसी बेहतर तरीके से इसकी अपनी पसंदीदगी को साबित करने की कोशिश करना था। वो उसे हैरियट फील्ड में ले गई और इस पर सबसे ज्यादा गैर मुतज़लज़ल मेहरबानी का मुजाहिरा किया, इस पर कब्जा करने और इसका दिल बहलाने की कोशिश की और किताबों और गुफ्तगू के जरिए मिस्टर एल्टन को उसके ख्यालात से निकालने के लिए कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि उसे अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए वक्त की इजाजत होनी चाहिए और वो खुद को आम तौर पर ऐसे मामलात की एक लाताल्लुक जज समझ सकती थी और खास तौर पर मिस्टर एल्टन के साथ हमदर्दी करने के लिए बहुत नाकाफी थी। लेकिन ये उसे मुनासिब मालूम हुआ कि हैरियट की उम्र में और तमाम उम्मीदें खत्म होने के साथ मिस्टर एल्टन की वापसी तक एक ऐसी पेशरफत हो सकती है जिससे उन सबको दोबारा मिलने का मौका मिले। शनासाई का आम मामूल जज्बात को धोखा देने या उनमें इजाफे के किसी खतरे के बगैर हैरियट ने उसे तमाम कमाल समझा और जाती या उछाई में इसके बराबर किसी की अदम मौजूदगी को बरकरार रखा और सच में खुद को इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत में साबित किया जितना एमा ने सोचा था। लेकिन इसके बावजूद ये उसके लिए इतना फितरी, इस कदर नागुज़ीर लग रहा था कि इस तरह के गैर महफूज झुकाव के खिलाफ जद्दोजहद करना कि वो बराबर ताकत के साथ इसके जारी रहने को बहुत देर तक समझ नहीं सकती थी। अगर मिस्टर एल्टन वापसी पर अपनी लाताल्लुकी को इतना वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद बना देते हैं जैसा कि वो इस बात पर शक नहीं कर सकती थी कि वो बेचैनी से ऐसा करेगा, तो वो तस्वुर नहीं कर सकती थी कि हैरियट अपनी खुशी को नजरों में रखने या उसे याद करने पर इसरार कर रही है। उनका तय होना बिल्कुल ठीक एक ही जगह तीनों के लिए, हर एक के लिए बुरा था। इनमें से किसी को हटाने या मुआशरे की किसी मादी तब्दीली को मुतासिर करने की ताकत नहीं थी। इन्हें एक दूसरे का सामना करना चाहिए और इसका बेहतरीन फायदा उठाना चाहिए। हैरियट मिसेस गॉडार्ड्स में अपने साथियों के लहजे में ज्यादा बदकिस्मत थी। मिस्टर एल्टन स्कूल के तमाम असातिज़ा और अजीम लड़कियों के प्यारे हैं और ये सिर्फ हैरियट फील्ड में ही होना चाहे कि उसे एतदाल या नफरत अंगेज सच्चाई के साथ इसकी बात सुनने का कोई मौका मिल सके। जहां जख्म दिया गया था वहां इलाज जरूर मिलना चाहिए और एमा ने महसूस किया कि जब तक वो उसे इलाज की राह पर नहीं डाल देती वो खुद के लिए कोई हकीकी सुकून नहीं हासिल कर सकती।